Good morning. This is Vijay Vadakbalkar, diabetes educator from Indo-Vietnam Medical Board and a health coach from Mumbai. I need to live our mission is to empower 100,000 people to live medicine-free life by empowering your 5 areas of your life. Number 1, your breath. Number 2, your thinking. Number 3, your eating. Number 4, your exercise. And number 5, your sleep. How? Natural. By teaching you 8-point emotional freedom technique, EFT technique, which will get rid of your stress from your life and which will replace cortisol and adrenaline by 4 happy hormones, which will help you reduce insulin resistance and in turn your blood sugar levels. If you are facing कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको खट्टी डकारे आते हैं या गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज होता है। गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज का जो दर्द होता है वो हार्ट अटैक के दर्द के बराबर होता है। लोग ये कंफ्यूज करते हैं, डॉक्टर कंफ्यूज करते हैं हार्ट अटैक हुआ है कि गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है। जितने भी सारे हार्ट अटैक वाले पेशेंट होंगे जिनको बोल रहा है यार लगता है हार्ट अटैक आ गया, एंजाइना पेन हो गया, चांस है कि वो हार्ट अटैक ना होकर वो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज हो। तो ऐसे पेशेंट्स के पेट को ठीक करने के लिए यही दवाई ग्रेविटी एज मेडिसिन वो कैसे यूज करते हैं। अब देखिए बड़ा सिंपल है। आप अगर पेट का शेप अगर समझेंगे अंदर से, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये अपने दाईं तरफ अगर जब करके लेटेंगे आप दाईं तरफ, तो पेट का शेप कुछ इस तरह से है कि वो जो पेट में जो एसिड है वो सीधे मुंह की तरफ जाएगा, क्योंकि पेट ऊपर की तरफ है और वहां से मुंह की तरफ एसिड आएगा। उसी पेशेंट को हम बोलते हैं खाना खाने के बाद जब लेटेंगे, जब तक नींद नहीं आ रही तब तक आप नीचे वाला देखिए, अगर वो अपने लेफ्ट साइड लेटेंगे तो अब पेट के अंदर जो फ्लूइड है, एसिड है, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे है, वो ऊपर की तरफ नहीं जा सकता बिकॉज ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन। एज ए रिजल्ट जब वो एसिड रिफ्लेक्स वो नहीं होगा तो यहाँ पे जो वॉल्व होता है जो खुलता बंद होता है उसको मौका मिलेगा अपने आप को रिपेयर करने का। कुछ दिन तक जब वो ऐसे करेगा कि लेटते वक्त नींद ना आए जब तक, तब तक इस पोस्चर में अगर वो लेट पाता है तो धीरे धीरे गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज उसका ठीक होने लगता है। Hope you like the contents of the video. So now is the time to take action. Number 1, take 3 actions immediately. Number 1, join Eat to Live community WhatsApp group. Number 2, do not forget to share subscribe button on this YouTube channel of Eat to Live and increase the number of subscribers to at least 100,000 people to live medicine-free life. Let's develop a community of like-minded people. Number 3, I hope by now you have already filled up Google form link. If not, do so. And if you haven't attended my daily 90 minutes free webinar on diabetes breakthrough consultation every day 7 p.m. on Monday to Friday, please do so. Thank you. And don't forget to share this video clipping with your near and dear ones. Good morning. This is Vijay Vadakbalkar, health coach from Mumbai and diabetes educator from Indo-Vietnam Medical Board. Our mission idea to live is to help you live medicine-free life and reverse your diabetes, reset your insulin resistance within 90 days by empowering your breath, your eating, your exercising, your sleep, by teaching you 8-point emotional freedom technique, and that too with zero medicine. So come on, join my community of Eat to Live as early as possible. All the best. Thank you. आपको बुखार आ गया, बुखार में क्या करते हैं आप? पैरासीटामोल लेते हैं, जबरदस्ती टेम्परेचर घटाते हैं। बुखार आपका कोई बीमारी नहीं है, बुखार इज हथियार, वो आपका बॉडी का वेपन है इन्फेक्शन से लड़ने का। उसे अगर हम कम करेंगे पैरासीटामोल से तो आपकी बीमारी लंबी चलेगी। तो हमारे हॉस्पिटल में क्या करते हैं, हमारे हॉस्पिटल में दवाइयाँ बैन है।
अगली बार आप करके देखिए, अगर किसी को भी बुखार आ जाता है, अब जो बोलने जा रहा हूँ 1 मिनट में, यही आपको करना है। आपको सिर्फ इतना करना है, बुखार में ये बाल्टी है, बाल्टी में टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस, ये थर्मोमीटर सबने चेक किया 42 डिग्री, ऐसा रखिए, राइट। और उस इंसान को ऐसे बिठा दीजिए आधे घंटे के लिए। तो बॉडी में फीवर ऑलरेडी है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर एग्जांपल, गर्म पानी में पैर रख दिए, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? और बढ़ जाएगा ना, आधा डिग्री और बढ़ जाएगा। आधे घंटे बाद जब ये पैर निकाल के बाहर आएगा, अब 15-20 मिनट आप देखेंगे, हैरान होंगे, तेजी से उसका टेम्परेचर नीचे आएगा, बॉडी एक चला जाएगा। वो बीमारी वायरल जो 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन चलना था, वो आधे घंटे के अंदर ही पूरी तरह ठीक हो जाता है, जस्ट 30 मिनट्स, राइट। सो इसके लिए टूल क्या चाहिए? ये रहा आपका टूल, राइट। ऐसा कुछ आप खरीद लीजिए ताकि आपको टेम्परेचर का ज्ञान हो, टेम्परेचर पता कर पाएं। ये टेम्परेचर 42 डिग्री मेंटेन भी करना है आपको, क्योंकि ये आधे घंटे तक जब बैठेगा टेम्परेचर तो डाउन होगा ना। एक और बाल्टी ले लीजिए, इसमें 50 डिग्री टेम्परेचर मेजर कर लीजिए। हर 5 मिनट में 1 मग पानी यहाँ से निकाला, 1 मग पानी इससे डाला, टू मेंटेन द टेम्परेचर। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic@home। Good morning. This is Vijay Vadakbalkar, diabetes educator from Indo-Vietnam Medical Board and a health coach from Mumbai. I did to live our mission is to empower 100,000 people to live medicine-free life by empowering your 5 areas of your life. Number 1, your breath. Number 2, your thinking. Number 3, your eating. Number 4, your exercise. And number 5, your sleep. How? Naturally, by teaching you 8-point emotional freedom technique, EFT technique, which will get rid of your stress from your life and which will replace cortisol and adrenaline by 4 happy hormones, which will help you reduce insulin resistance and in turn your blood sugar levels. If you are facing, good morning, Vijay Vadakbalkar from Eat to Live. Today I'm going to give you a health hack for implementing 7 or 10 habits that I always talk about, that will change your life, that will reset your insulin resistance to 0 and you will become non-diabetic. Let's start, come to the point. And to remember that, remember the word SAVERS, SAVERS. First S stands for silence within you. Start practicing meditation, and that meditation, I'll give you the script. I am whole, I am perfect, I am strong, I am powerful, I am loving, I am harmonious, I am rich, I am young, I am happy, I give thanks. These are 9 positives. These are the 9 truths of your energy within you, the prana energy within you. And if you go and get in touch with prana energy every single day, at least 5 minutes when you get up in the morning and 5 minutes before you go to bed, you will get a good night's sleep, quality sleep, which is S stands for silence. Practice of silence will ensure good quality sleep and will reset your insulin resistance to 0. So practice first S. A stands for affirmations, positive affirmations. Positive affirmations turn your thought from negative to positive. If I am whole, perfect, strong, powerful, loving, harmonious, rich, young, happy, if I want to be happy, I want to be healthier, I need to practice this line 100 times, 1000 times, say in a loud voice, audible to myself, a sentence like I say, I am super healthy, I am happy, I am young,
I'm super healthy, I'm happy, I'm young. I'm super healthy, I'm happy, I'm young. So A stands for positive affirmations. V stands for visualization. It is your creative power within you, is a God's power given to you, or to imagine whatever you want in life. If I want to be rich, I should imagine I am earning 8 lakhs a month. Whatever the figure of you want to earn. You say that I am super healthy, happy, young. I earn dash per month. And if you visualize your dreams into reality, the dreams will become actual, will become real. Practice visualization technique. We'll talk more about it as in our daily mentors meeting, weekly mentors meeting rather, and I'll tell you more about it during that time. Next, E stands for eating the right food and exercising. Eating the nutrition based, low fat, low carb, fiber rich, whole food, plant based diet, and at times not eating, that is fasting, is what you need to practice on a daily basis. I'll talk more about it. And so E stands for eating, E stands for not eating, E stands for timely eating, fasting, and also exercising for at least half an hour every single day. You need to go for a brisk walk for 35 minutes. If that's not also possible, after both the meals, get a stroll for 10 to 15 minutes after both the meals, and make sure you at least do anti-gravity exercise, climbing stairs up and down 100 steps, which will reset your insulin resistance to 0. Then next, R stands for read. Read 5 minutes a good book. It will change your life in next 5 years. Right? So reading is very important. And R also stands for relaxing. Practice meditation. Practice going within you and observe the silence within you, because that is the only truth you have. Hope you like the contents of the video. So now is the time to take action. Number 1, take 3 actions immediately. Number 1, join Eat to Live community WhatsApp group. Number 2, do not forget to share subscribe button on this YouTube channel of Eat to Live, and increase the number of subscribers to at least 100,000 people to live medicine-free life. Let's develop a community of like-minded people. Number 3, I hope by now you have already filled up Google form link. If not, do so. And if you haven't attended my daily 90 minutes free webinar on diabetes breakthrough consultation every day 7 p.m. on Monday to Friday, please do so. Thank you, and don't forget to share this video clipping with your near and dear ones.